Tap the bell icon on the YouTube app and never miss out on unique stories from 101 India. I think it's important to preserve and curate one's history and heritage because it gives some kind of a reference point to future generations to start building their own stories. On this outing of magnificent motorcycle men, we're going to discover a fine vintage in the BSA M20, a 500cc single-cylinder side-valve 4-stroke engine that put out 13 bhp, which was considered quite a lot back in the day. The BSA M20 was considered one of the longest-serving motorcycles in the history of British military motorcycling, which had about 126,000 in active service across all theatres of war during World War II. Post the war, these bikes found themselves lying in collectors' garages or in junkyards catching rust and dust till some passionate bikers found these bikes and restored them back to their original glory. This is a story of two magnificent motorcycle men and their journey towards restoring a piece of motorcycling history. My name is Adhiraj Singh Khatipura from Rajasthan. I restore vintage bikes and jeeps. I own a 1941 BSA M20. These old motorcycles are found in junkyards, big junkyards, small junkyards, old mechanics workshops, in collectors' garages, old homes, havelis, and we basically bring them in parts, you find one part somewhere, you find the other part somewhere. It takes about a year and a half to bring everything together and build the whole motorcycle from scratch. We found this with my father's very old mechanic. Unka naam Guruji tha, and Guruji was the only one in Jaipur who could fix imported bikes. And my father was after this bike for about 10 years. So before Guruji passed away, my dad struck a deal with him and got this bike, so we could restore it and bring it back to its old glory. I'm outside SRG Repairs, which is Kailash Ji's workshop. Kailash Ji is Jaipur city's most prolific bike restorer and mechanic. Let's go meet the man and find out more about the BSA M20. मेरा नाम कैलाश चंद शर्मा है। मेरे फादर का नाम दामोदर शर्मा था और उनको इस नाम से बहुत गिने चुने लोग जानते थे, क्योंकि सब लोग उनको गुरुजी बोला करते थे और गुरुजी के नाम से ही वो सब जगह फेमस थे। मैं भी जिस गाड़ी के साथ खड़ा हूँ इसको BSA 500cc बोलते हैं और ये 1942 का मॉडल है और कई लोग इसको जो शॉर्ट नेम है M20 के नाम से भी जानते हैं। ये गाड़ियाँ शुरू में आर्मी ऑक्शन से ऑक्शन हुआ करती थी, जब फिर पब्लिक को मिला करती थी, और इम्पोर्ट इनका जो है 1957 में बंद हो गया था। उससे पहले इम्पोर्ट होती थी गाड़ियाँ। अधिराज के फादर और मेरे फादर बहुत अच्छे एक दूसरे से परिचित थे और उन्होंने अधिराज के फादर को खुद का M20 दिया था। उसको उन्होंने करीबन 40 साल खुद के पास रखा था। अधिराज के फादर की BSA कंप्लीट करने में मुझे 1 साल का टाइम लगा पूरा, और उसके लिए जितने भी पार्ट उसमें इंजन में मैंने फिट किए वो सब इंपोर्ट किए थे और मेड इन इंग्लैंड ही डाले हैं उसके अंदर। What I like most about the BSA M20 is the 3-gallon fuel tank for long range, the Smith's speedometer, the Jaeger ampere meter. Headlight comes in 2 different variants. One was used as blackout, which was helpful during wartime, and the civilian one came with a Lucas beam, which you can see here. Coming to the suspension, it is a girder type, fully adjustable suspension, which could be set for road and off-road use. It's got a air filter box which was made for the desert specifically, which goes on top of the tank. So your air intake is much cleaner when you're riding it. मेरी सबसे फेवरेट विंटेज बाइक है BSA 500 M20। इसका रीज़न इसका पावरफुल इंजन और साउंड। इसकी खासियत यह है कि ये बिल्कुल 10-5 किलोमीटर की स्पीड से भी बिल्कुल एक स्ट्रोक गिनाती हुई चल सकती है, क्योंकि इसका स्ट्रोक काफ़ी लंबा होता है। ये इसको 5 हॉर्स पावर भी बोल सकते हो आप और 500cc भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि पुराने टाइम पे गाड़ी की पावर की जो तुलना है वो हॉर्स से ही की जाती थी।
गाड़ी को जब मैं तैयार करता हूँ तो ये सोच करके करता हूँ कि एक डॉक्टर का मरीज के प्रति जो रवैया होना चाहिए उस रवैये से मैं काम करता हूँ। और कंप्लीट जब गाड़ी हो जाती है मेरे सामने चलती है या गाड़ी मालिक उसको लेकर के चलाते हैं तो उनको देख करके बड़ी खुशी होती है कि मैंने किसी एक ख़त्म गाड़ी को पुनर्जीवित कर दिया। विंटेज का जो दौर दोबारा से चालू हुआ है, अब ये कभी ख़त्म होने वाला दौर नहीं है, क्योंकि नई जनरेशन जो है इसके प्रति काफ़ी जागरूक हो चुकी है कि भाई इन चीज़ों को अपने को संभाल करके रखना है और लॉन्ग टाइम तक रखना है। Tell us what you thought of our fine vintage, the BSA M20, and what you thought of Magnificent Motorcycle Men by leaving us a comment below and hitting like. Also, if you like Magnificent Motorcycle Men and want to check out more such videos on 101india.com, you can do so right here. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. And remember, the success of our future lies in the preservation of our past.